Hello everyone. So how all you are? I hope you all are good and fine. Right? Now, today we are going to conduct the second part of our second story of PRISM. Okay? Means we are going to see the second part of our story PRISM. Means of our book PRISM. The second story, that is advice to youth. Okay? We're going to see the second part. The first part I have already completed, right? In which I have just told you, I have just gave you a gist. Okay? Now, this is the second part. Okay? This is the second part of this poem, of this story. That is Advice to Youth by Mark Twain. We have discussed who is Mark Twain, right? And we have discussed some gist of this like short story. Now today we're going to see the summary, but in a detailed manner. Means we're going to see the summary in a very detailed manner. And second thing, this is not a story. Mark Twain didn't write a story. He has written an essay. Means this whole poem, this advice to youth, this whole poem isn't a poem, but it is an essay. All right. So I hope this is clear. Okay. And next most important thing, I don't know what. Yep. And next most important thing, this whole story, advice to youth. This is full of satire, okay, irony, okay, this is full of satire. Just wait. This poem, this is full of satire, irony, and this poem is full of sarcasm as well. Okay, this whole poem is full of sarcasm as well. Means this poem is full of satire, irony and sarcasm. Now, you know irony. What is irony? Okay, irony means something very ridiculous. Okay, something is very mocky. Okay, कुछ बहुत मजाक वाली बात. Okay, something very ridiculous. Okay, you know the meaning of satire as well. We have discussed, okay, that the use of words, okay, it is satire means the use of words that means the opposite of what you really want to say. Okay, this is irony, this is satire, and sarcasm. This is a very new word for you. What do you mean by sarcasm? Means saying your thing, saying your talk, okay, saying your talk in a very twisted manner. मतलब घुमा फिरा कर कोई बात को कहना. Means आप कहना कुछ और चाहते हैं पर आप अपोजिट डायरेक्शन में उसे कह रहे हैं. ओके, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है ओबे योर पेरेंट्स, है ना. हमने देखो कि हमने स्टोरी पढ़ ली है. ओके, एडवाइस टू यूथ हम पढ़ चुके हैं इस स्टोरी को. ओके, बस फ़र्क इतना है कि हमने बहुत छोटा सा लेक्चर देखा था, approximately of 30 minutes, okay, which is not enough for you, I hope. Okay, but yet we have completed the multiple choice questions. Okay, and yeah, so इसमें satire क्या है, इसमें sarcasm क्या है, इसमें irony क्या है. Let's see. हमने देखा था first advice क्या थी. What was the first suggestion? What was the first advice given by Mark Twain? He said that obey your parents, but when they are present. Means obey your parents, but when they are present. If they are not present, to whom you will obey. Okay, so but when they are present is ironical statement. It is sarcasm. Okay, it is satire. Okay, means कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें थोड़ी फनी लगे. ओके, थोड़ा सा उसे ट्विस्टेड वे में कह दिया जाए, अपोजिट उसका सेंस निकाल दिया जाए. ओके, और कुछ बहुत रेडिकुलस हो, कुछ बहुत मजाकिया हो.
जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है वो ही होता है हमारा क्या, सटायर, आयरनी एंड सरकाजम। समझ आई? दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर यू, सरकाजम। बट इसका मीनिंग भी वो ये है कि किसी भी चीज़ को हमें ऐसे मतलब किसी भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिससे कि हम जो कहना चाहते हैं उसे अपोजिट मतलब उसे अपोजिट वे में कहना। जैसे कि यू आर नॉट लाइक ही इज बैड, ही इज बैड। लेट इट टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस sarcasm. Okay, for this sarcasm let's take an example. मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा. Let's take an example. He is a very bad boy. He is a very bad boy. वह बहुत बुरा लड़का है. वह बहुत बुरा लड़का है. He is not a good boy. This is also a way to say he is a bad boy. है ना, मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है तो क्या हुआ, ऑब्वियसली वो बुरा हुआ. तो अगर हम उस बात को घुमा फिरा कर हम कह देते हैं, उसी बात को ट्विस्ट करके कह देते हैं, वही हमारा होता है सरकाज़म. ओके, मतलब हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिससे कि मतलब हम जो कहना चाहते हैं उसे हम अपोजिट वे में कहें. जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि वो लड़का बहुत बुरा है, तो मैंने कह दिया वो अच्छा लड़का नहीं है. जब वो अच्छा लड़का नहीं है तो वो क्या हुआ, बुरा हुआ. ठीक है, तो इसी का मतलब होता है सरकाज़म. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. ओके, तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो पूरी शॉर्ट स्टोरी है, पूरी शॉर्ट स्टोरी एडवाइस टू यूथ, दिस इज फुल ऑफ सटायर, फुल ऑफ आयरनी एंड फुल ऑफ सरकाज़म. ओके, आई होप दिस इज क्लियर to you. ओके, सटायर समथिंग वेरी रिडिकुलस. आयरनी का मतलब भी यही होता है, समथिंग वेरी फनी, वेरी मॉन्की. ओके, मॉकी. एंड सरकाज़म का मतलब भी यही होता है कि कोई बात हम मतलब सेम बात को थोड़ा ट्विस्ट करके कहना, बातों को घुमा फिरा कर कहना इज नोन एज सरकाज़म. ठीक है, सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस होल स्टोरी. यही 3 फिगर ऑफ स्पीच इस पूरी स्टोरी में यूज है. I didn't tell you later, like earlier. I didn't tell you this earlier, but since we are going to see some detailed explanation of this like story, that's why I'm telling you this. Okay. Now let's start our today's day with a positive vibe. Okay. Let's absorb some positive vibe. Okay, and let's emit all that negative senses. Okay, so what does this say? Since this whole short story is about youth, okay, here Mark Twain has gave us a number of advices for youngsters, for youth. Okay, so that's why the positive vibe, the motivation is also on youth. And this positive quote is said by Joseph Rizal. Okay, he said, "The youth is the hope of our future." That's we all know. And we all know this, that the youth is the it is the base of our future, which we'll see tomorrow. Okay. Means our future, as I told you in our earlier lecture as well, our future is depend on youth. Okay, हमारा जो पूरा फ्यूचर है वो किन पे डिपेंड करता है, यूथ पर डिपेंड करता है. यूथ आर द बेस ऑफ आवर फ्यूचर. Just ponder by yourself. If our youth are not good enough, they are not wise enough, they are not intelligent enough, will our India be able to exist? Will our world be able to exist? No. Because if they are bullish, okay, if they are crazy, if they don't know, if they are very sluggy, so how they can hold our all the things like constituent, how they can hold our administration, how they can hold our business, how they can hold our country as well. One or the another have to become the prime minister as well tomorrow after Narendra Modi. Okay, so how he will
look after all the countries and how he will resolve the problems facing by our country, our world as well. So this is very obligatory part, this is very crucial part, that our whole future is just depend on whom? Youth. Okay, so with this positive vibe, let's start our today's short story number 2, advice to youth. And please tell me that what is your half yearly syllabus, because as much as I know, you're having 2 chapters of poetry, 2 chapters of short stories, and 1 act of Macbeth. Okay, if you have any change in your syllabus, do tell me in the comment section immediately, right now, after watching this video. Do tell me in the comment section. Okay, and if you're watching right now, please do tell me right now, drop down the comments that what are your syllabus of your half yearly exam, of your midterm exam. Okay, so that I can complete your syllabus according to that and as soon as possible. Now let's start our today's short story. Okay, as I told you, this short story, Mark Twain, this short story, Advice to Youth, is written by Mark Twain. It is written in 1882. It is full of jokes and funny advice for the young people. जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्टोरी फुल है किससे, सटायर एंड आयरनी एंड सरकाज़म. ये पूरी की पूरी स्टोरी किस चीज़ से भरी पड़ी है? Very funny and jokes and funny and jokes things by Mark Twain. Okay, पूरी की पूरी जो ये शॉर्ट स्टोरी है, ये है पूरी की पूरी ridiculous. Okay, and very it is having a mock as well. Okay, it is very mocky. Now Twain starts by saying that kids should always listen to their parents when they are around. This is because parents think they know better, and it is easier to just go along with what they say. Obviously, our first advice, what we have read always obey your parents, but when they are present. See the sarcasm. Open your text right now. Okay, open your text and let's see the irony, let's see the satire nature of Mark Twain, how he used the satire. Okay, here Mark Twain says that always obey your parents, always listen to your parents, but when they are around, when they are present. This when they are present or when they are around, this is whole satire, this is whole sarcasm, this is whole ironical statement. Okay, just you think that if they are not present, to whom you will obey? Obviously, Mark Twain has told that obey your parents, but when they are present. And if they are absent, to whom you will obey? So he has said his things in a very a puzzled manner. He has uncrumbled all his thoughts. Okay, the title is very straightforward. You see, you will ponder that this is a very very interesting and very simple short story. Advice to youth. Obviously, Mark Twain has given us some advice. बस इतना ही होगा, बट नहीं, इसमें उन्होंने सरकाज़म का भी यूज़ किया है, इसमें उन्होंने आयरॉनिकल स्टेटमेंट डाले हैं, इसमें उन्होंने सटायरनेस का यूज़ किया है. मतलब अपने पेरेंट्स को ओबे करो, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट, जब वो तुम्हारे सामने है. जब वो तुम्हारे सामने है ही नहीं तो तुम किन्हें ओबे करोगे, तुम किन्हें रिस्पेक्ट करोगे? Obviously, this statement is whole satire in nature. समझ आ रही बात? Now, next advice. Okay, this is left. Okay, sorry. This is because parents think they know better, and it's easier to just go along with what they say. And
like our parents used to ponder, हमने ये सब देखा है, that they think that they know better than you, means they used to say ना कि हमने पूरी दुनिया देखी है, हम आपसे अच्छा जानते हैं, right? So this is the misunderstanding of a parent, of a guardian, that they think that they know better than children, better than their kids. No, it is not. It means it can be possible or it cannot be possible. Maybe a child can have a great knowledge than his or her parent. Okay? So this is not totally obligatory that a parent know everything. Okay? So that's why Mark Twain has said, he has given us a satire that most of the parents think that they know better than children. Okay? And this is like they used to think that they can do the better judgment. Okay, means they know better than you, है ना? Parents क्या सोचते हैं कि we know better than our children because we are elder, we have seen the world. But this is their mistake. This is our parents' mistake. Our child can also know better than the parent. Okay, so that's why Mark Twain has said that obey your parents, but when they are present, because most of the parents think that if you like don't obey them, okay, if you don't obey them and if you not respect them, so they generally tell you, they generally make you so to respect them. ओके वो आपको ऐसा बना देंगे जिस आप उससे आप उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? एंड नेक्स्ट एडवाइस, okay, next advice he has said, he also says that kids should be respectful to people who are in charge and to strangers. If someone upsets you, he jokes that you should wait for a chance and hit them with a brick. ये हमने देखा है that the second advice of Mark Twain, he has said that always obey your superiors, always respect your superiors. If you have any, okay, if you have any is again a satire used by Mark Twain. Obviously, each and every one have their superiors. Are you without superiors? No. It doesn't mean that you are not having any like real brother and sister or any cousin, so you are not having any superior. Your uncle is your superior. Your grandparents are your superiors. The strangers who is elder than you is your superior. Everyone in this world have their own superiors. Even our grandparents, they have their superiors. Okay, so here Mark Twain has said in a very satire way, बहुत ही satirical way में उन्होंने कहा है कि obey your superiors, respect your superiors if you have any. अगर आपके पास है कोई, ऐसा कैसे हो सकता है किसी के पास superiors ना हो? सबके पास अपने superiors होते हैं, कोई बिना superiors के नहीं होता है. चलो भाई बहन नहीं है, अंकल आंटी नहीं है, तो पेरेंट्स तो हैं, they are your superiors. तो everyone have their superiors. But here Mark Twain has gave us a satirical statement that if you have any. Okay? Next, respect to your people who are charged and to strangers. Means who are in charge means who are elder than you, and to strangers as well. And respect to your strangers as well. It doesn't mean that your own relatives are your superiors, so you have to respect them only. And rest you'll give them a slap. No. You have to respect each and every superior you are having. Okay? Next, if someone upsets you, he jokes that you should wait for a chance and hit them with a brick. और अगर आपको कोई परेशान करे, if someone offend you, if a person offends you, means if a person hurts you and you are in doubt as to whether it was intentional or not, do not report to extreme measures. Simply watch your time and hit him with a brick. That will be sufficient. Open your text. Rapidly go and open your text first. Open your text first. Okay, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको टेक्स्ट से समझाऊंगा. ठीक है? So open your text first.
सेकेंड वाला क्या था कि हमेशा अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करो, ओके। बट इफ दे ऑफेंड यू, इफ दे हर्ट यू, ओके, इफ अ पर्सन हर्ट यू, ऑफेंस का मतलब होता है हर्ट, इफ अ पर्सन ऑफेंस यू एंड यू आर इन डाउट एज टू वेदर इट वॉज इंटेंशनल और नॉट, do not resort to extreme measures. Simply watch your time, watch your chance and hit him with a brick. That will be sufficient. मतलब अगर कोई भी सुपीरियर, कोई भी एल्डर आपको मारे, आपको ऑफेंड करे, आपको हर्ट करे, डोंट थिंक दैट इट वॉज वेदर इट वॉज इंटेंशनल और नॉट। ये मत सोचो कि वो इंटेंशनल था या नॉन इंटेंशनल था, मतलब जानबूझ के मारे या गलती से लग गया, ये मत सोचो। जस्ट सी योर चांस, अपना चांस देखो एंड गिव देम अ रिस्पॉन्ड, गिव देम अ रिस्पॉन्ड मीन्स हिट विद अ ब्रिक, ओके। हिट देम विद अ ब्रिक का मतलब है हिट देम बैक, हिट देम बैक मतलब उन्हें मारो, ओके, हिट देम बैक। बट he also says that violence isn't a good idea. पर देखो सटायर देखो यहाँ पे, this statement is satirical in nature, but वो ये भी कहते हैं कि violence एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो आपको, अगर कोई भी सुपीरियर आपको मारे तो आप उसे मारो, आप उसे पलट कर मारो। और फिर ये सेकेंड लाइन में ये भी कहते हैं कि जो ये violence है ये it is not good for you, it is not good for youth, ये यूथ के लिए अच्छा ही नहीं है। See the satire used by the Mark Twain. How satirical words he is using. Okay, this is satirical in nature. This whole thing, मैं आपको बता दूं क्या क्या satirical है. Okay. When they are around is satirical in nature. ठीक है? And violence isn't a good idea. This is satirical in nature. ये पूरा satirical sentences यूज किए गए हैं मार्क ट्वेन के थ्रू, ओके। तो वो यही कहते हैं कि अगर आप मतलब अपने सुपीरियर्स का आप रिस्पेक्ट करो, ओके, पर अगर वो ऑफेंड करें आपको, अगर वो आपको परेशान करें, आपको हर्ट करें, तो अपना चांस देखो और उन्हें रिस्पॉन्ड दो, मतलब उन्हें मारो, ठीक है। अगर वो आपको मारे तो उन्हें आप मारो, ओके। इस चीज़ में मत सोचो कि वो इंटेंशनल उन्होंने किया था या अनइंटेंशनली उन्होंने मारा था, मतलब ये मत सोचो कि गलती से हो गया, जानबूझ के मारा है। सीधे अपना टाइम देखो और सही समय पे सही समय आने पे उन्हें रिस्पॉन्ड करो, उन्हें मारो, ओके। ये सफिशिएंट है, ओके, दिस इज सफिशिएंट, राइट। सो ये यहाँ पे सेकेंड लाइन में मार्क ट्वेन कहते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में, if you shall find that he had not intended any offense, come out frankly and confess yourself in the wrong. When you struck him, acknowledge it like a man and say you didn't mean to. और अगर like it was non-intentional, it was by mistake, so just say them, like just apologize to him or her. Just frankly confess your treason, confess your mistake. Just accept your mistake and apologize to him. Okay? गलती मानो और उनसे माफ़ी मांगो. Yes, always avoid violence in this age of charity and kindliness. The time has gone by for such things. Leave your dynamite to the low and unrefined. और मार्क ट्वेन ये भी कहते हैं कि इस यूथ एज पर, इस यंग एज पर, you should avoid violence. You should avoid violence, and in this age you have to focus on charity and on good work, okay. So this was just like second advice given by Mark Twain. First was obey your parents but when they are present. Next, like respect your superiors if you have any, and if they hurt you, if they offend you, hit them with a brick, okay. And if don't think that it was intentional or like unintentional, but if it is unintentional, just apologize to him, okay. So I hope these both the advices clear to you, okay. अब third advice देखते हैं. Twain suggests that it is a good idea to go to bed early and wake up early. It makes a joke. He makes a joke about waking up with the word called a lark.
He says you can train the world to wake up late so you can still seem like you are waking up early. ये आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको समझ ही नहीं आया वो क्या कह दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, हर एक पैराग्राफ में, हर एक चीज में ही इज यूजिंग सरकाजम, ही इज यूजिंग सटायर, ही इज यूजिंग आयरनी. ओके. थर्ड क्या कहते हैं मार्क ट्वेन, गेट अप अर्ली, मतलब जल्दी उठो, जल्दी बेड पे सो और जल्दी उठो. ओके. ही सजेस्ट इट इज अ गुड आइडिया टू गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली. ओके, मतलब जल्दी रात को सो और सुबह जल्दी उठो. ओके. He makes a joke and waking up with the world choral lark, or he adds satire in his sentence. अब वो satirically बोलते हैं कि but you can train the lark. Lark is a type of bird as I told you. Lark एक type की bird होती है. Okay, lark it is a hard singing bird. एक type की bird होती है. तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि you can do one thing. You can train your lark, you can train your bird according to your convenient time. ओके. आप अपने चिड़िया से कह दो, आप अपने पक्षी से कह दो कि वो उस समय पे आपको मतलब उठाए, उस समय पे वो लाइक इट अटर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके. वेदर इट इज लेट. ओके. यू कैन ट्रेन योर बर्ड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट टाइम. ओके. अगर आपको लेट उठना है तो आप उस वक्त पे अपने लार्क को, अपनी चिड़िया को ट्रेन कर सकते हैं कि कल सपोज कल तुम्हें 11 बजे उठना है तो यू कैन ट्रेन योर लाइक लार्क, यू कैन ट्रेन योर बर्ड. ओके. to utter at 11 o'clock so that you can like wake up according to your convenient time. तो यहाँ पे ही use satire. Okay, that go to bed early and get up early. This is wise. But some people says get up with the sun. Some says get up with one thing another, with another. But a lark is really the best thing to get up with. Okay, सब लोग ये कहते हैं कि अलार्म क्लॉक से जगो. Okay, कुछ कहते हैं कि like you can some says that wake up with the alarm clock. Okay, and some says that get up with sun, जब सूरज निकले तब उठना चाहिए. But according to me, okay, lark is a good thing. लार्क जो है वो सबसे बढ़िया चीज़ है क्योंकि आप उसे ट्रेन कर सकते हैं. आपको जिस समय भी उठना है उस समय पे आप उस चिड़िया को ट्रेन कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग टू गेट अप विथ. Okay, it gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with the lark. And if you get the right kind of lark and work at him right, you can easily train him to get up at 9:30. Even time, it's not trick at all. Okay, means कहते हैं कि आप लार्क चिड़िया को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं. ओके, और वो आपको आप जितने भी बजे चाहें, आप चाहे 10 बजे उठें, चाहे 11 बजे उठें, चाहे 12 बजे उठें, आप अपने अकॉर्डिंग लार्क को ट्रेन कर सकते हैं. ओके, जिससे कि आपको मतलब आप मतलब जल्दी भी नहीं, मतलब आप देर में भी नहीं उठेंगे, लेट भी नहीं उठेंगे और आप सही से उठ भी जाएंगे. ओके, सो here he used the satire of lark. Okay, he has said that train the lark could like how can you train a bird? How can you train a bird? This thing. Okay, you can't train a bird, right? So this is a satire. This is sarcasm in nature. ये सारी चीजें sarcasmly he is saying. Okay. Next advice. Next thing he has said that when it comes to lying, Twain says to be careful if you get caught lying. People might not trust you anymore. He makes a joke that a good lie can last forever, using the example of a man who lied about discovering something important. Right? Very important paragraph. Third paragraph पे कहते हैं, now as to the matter of lying, you want to be very careful about lying, otherwise you are nearly sure to get caught. Means if you means अगर आप झूठ बोलें, ओके, अगर आप झूठ बोलें तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. वाई?
Why you should be very careful? Because once you will caught, अगर एक बार आप पकड़े गए तो तो जो लोग हैं उनसे आपको वो विश्वास उठ जाएगा. कहते नहीं अगर एक बार झूठ पकड़ा जाए तो दोबारा वो वाला विश्वास नहीं हो सकता. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. सपोज मैंने आपसे झूठ बोला कि नहीं मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा. ओके मतलब मैं आपको लेट्स सी मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा 11th क्लास की. ओके बट मैंने 11th क्लास की फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाई. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम पे 12th जब आएगा आपका तब मैंने कहा कि मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा. तो वुड यू बी एबल टू लाइक ट्रस्ट ऑन मी? क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? नो, यू विल नॉट ट्रस्ट ऑन मी. बिकॉज जब मैंने 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने का वादा किया था और मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं 12th में क्या भरोसा मैं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, है ना. तो अगर एक बार आप झूठ बोलते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो लोग आप पे वो दोबारा वाला विश्वास नहीं करते हैं. ओके सो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर uttering lie. ओके बिकॉज what he has said that lie is an art. Telling lie is an art. You should be perfection. You should have a perfection in that. Okay, lie कैसी होनी चाहिए? एक आर्ट की तरह होनी चाहिए. You should have a perfection. Unless your lie is not an art, it is not like an art. You should not utter that. Okay. Now he makes a joke. He uses satire. He makes a joke का मतलब है he used the satirism. Used the satire. He add the satire by saying that a good lie can last forever, using the example of a man who lied about discovering something important. And a good lie, if you are a perfection, if you are a perfectionist, अगर आप बहुत ही बेहतरीन हैं झूठ बोलने में तो आपका झूठ पकड़ा नहीं जा सकता है. Okay, that's why Mark Twain has said that lie, saying lie is an art. Okay, it should be an art. Because once if you caught, you'll not get that previous belief on the pupil. Okay, like pupil on you. But if you are a perfectionist, if you are a very talented about lying, about saying lie, so you should speak. Okay, you should speak that lie. Because अगर आप एक बहुत परफेक्शनेट हैं, अगर आप बहुत ही बेहतर हैं लाई बोलने झूठ बोलने में तो आपका जो झूठ है बिल्कुल सच की तरह ही होगा. ओके जो झूठ होगा वो सच की तरह ही होगा. ओके वो सच से भी बहुत अच्छा होगा. ओके इफ यू आर एन आर्टिस्ट ऑफ सेइंग लाई सो योर लाई इज इक्वल और मोर देन अ ट्रुथ. सब बिलीव करेंगे. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बॉस्टन का. ओके आई डोंट नो आई हैव टोल्ड यू दिस और नॉट. यहाँ पे एक here a maxim is giving, a like proverb is giving. Maxim का मतलब होता है proverb. A proverb is giving that, open your book and just see. A maxim is giving that truth is mighty and will prevail. I'm sorry. Here Mark Twain says truth is mighty and will prevail. मतलब the truth is very powerful and one day it will ooze out. सॉरी मतलब जो ट्रुथ होता है जो सच होता है बहुत शक्तिशाली होता है. एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है कैसे भी करके. तो हमें सच मतलब हमें अगर झूठ बोलना नहीं आता है, इफ़ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट इन सेइंग लाई यू शुड नॉट स्पीक अ ट्रुथ. क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं झूठ बोलने में तो आप बोल सकते हैं झूठ क्योंकि वो सच की तरह ही होता है. ओके जो झूठ होता है दैट इज इमॉर्टल इफ यू आर अ गुड लायर. यहाँ पे एक इंसिडेंट को लाइक किया गया है. यहाँ पे एक इंसिडेंट को लाइक बताया गया है बाय मार्क ट्वेन. As I told you as in our previous one as well that there was a building known as Boston Monument. There was a monument that was Boston. Okay, so a man he discovered the anesthesia. Okay, देखो जो बॉस्टन मॉन्यूमेंट है उसमें एनेस्थीसिया जो है वो रखी हुई है. एनेस्थीसिया, व्हाट इज एनेस्थीसिया? A injection which is used to give before operation so that the patient can get like unconscious. Okay,
he or she can get unconscious, बेहोशी का जो इंजेक्शन होता है, एनेस्थीसिया. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो बॉस्टन मॉन्यूमेंट है, ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. देयर इज अ मॉन्यूमेंट नेम बॉस्टन मॉन्यूमेंट. वहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन रखा हुआ है. ओके, बट it was discovered by any other person. Okay, it was discovered by any other person. A man who discovered anesthesia. Many people are aware in these later days that man didn't discover it at all, but stole the discovery from another man. Is this true, mighty, and will it prevail? Means जिस इंसान ने ये जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन रखा था बॉस्टन मॉन्यूमेंट में, एक्चुअली उस इंसान ने इस इंजेक्शन को डिस्कवर नहीं किया था. रेदर ही स्टोल दिस इंजेक्शन फ्रॉम एनी अदर पर्सन. जो इसका रियल डिस्कवरर है उससे उस इंसान ने उसे चुरा लिया था और बॉस्टन मॉन्यूमेंट में रख दिया था. जब बाद में लोगों को पता चला कि ये इंजेक्शन उस इंसान ने नहीं बनाया है, किसी दूसरे इंसान ने बनाया है, देन दे कम टू नो दैट द ट्रुथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल. मतलब जो ट्रुथ है दैट इज वेरी पावरफुल एंड वन डे इट विल कम आउट. ओके, सो इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज अ वेरी करेक्ट प्रोवर्ब, दैट दिस इज अ वेरी करेक्ट मैक्सिम का मतलब होता है प्रोवर्ब. This is a very correct proverb that truth is mighty, it is very powerful, and it is having the tendency, it is having the capacity to come out. Okay? Yeah. Now, next advice. So here Mark Twain has concluded that a feeble, okay, a very weak and very feeble, very leaky lie will not stay for more days. Okay, a feeble, stupid lie will not stay for more days. It will come out very soon. तो अगर आपको झूठ बोलना है, so speak like an art. If you're not a perfect person, if you're not an artist in telling lie, you should not speak a lie. है ना? झूठ बोलना भी मतलब कहते नहीं तो मैं तो झूठ बोलना भी नहीं आता. क्यों ऐसा कहते हैं? Because he cannot speak a good lie. He is not an artist. He is not a perfectional person. Okay, so that's why Mark Twain has said that unless you are not a perfect in this telling lie, you should not speak lie. Okay, जब तक आपका झूठ बिल्कुल सच की तरह ना लगे और उससे भी बढ़कर ना लगे, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. ओके, एक आर्टिस्ट कौन होता है झूठ बोलने का? एक आर्टिस्ट वही होता है जो बिल्कुल ऐसा झूठ बोले जो बिल्कुल सच की तरह लगे, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि वो सच बोल रहा है ना? तो अगर वो झूठ आप बोल रहे हैं, इट इज ओके. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. एंड नेक्स्ट थिंग ही हैज सेड that never handle firearms carelessly, means never handle the armaments very carelessly. Okay, Twain also talk about being careful with guns. He tells a story about a boy who pointed a gun at his grandma as a joke, thinking it wasn't loaded. I'm sorry, luckily it wasn't, but Twain uses this story to show that playing with guns can be dangerous. Here, Mark Twain has advised us that never play with the firearms. Okay? Never play with these firearms. Firearms means these armaments, these guns, bombs, these जो गोला बारूद होते हैं, है ना? उन सब से हमें नहीं खेलना चाहिए. हमें कभी नहीं अपने हाथ में लेनी चाहिए. Okay? Because they can be loaded. Okay, they can be loaded, and if they are loaded, they can be fatal. So here Mark Twain has said, he has discussed one story regarding this. उन्होंने कहा था कि एक बार grandson, okay, जो grandma है, एक boy था एक जगह, okay, village में एक boy रहता था. He was just kidding. Okay, he was just kidding. Okay, and he was just pointing the gun towards his grandma,
towards his granny. Okay, अपनी दादी के ऊपर उसने गन ऐसे तान दी थी और वो कह रहा था कि I will shoot you. Okay, but luckily it was not loaded. वो loaded नहीं थी. It was not loaded. It was not having the bullets. Okay, भगवान की उससे कृपा से उसमें गोली नहीं थी. ओके, बट अगर उसमें गोली होती तो उसकी ग्रैनी मर सकती थी. ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि नेवर गेव दिस फायर आर्म्स टू द स्टूपिड पर्सन एंड टू द यूथ. ओके, Twain uses this story to show this that playing with the guns can be fatal, can be dangerous. ओके, टोइन ने इस स्टोरी को इसलिए यूज़ किया है जिससे कि वो यूथ को बता सके दैट प्लेइंग विद फायर आर्म्स, प्लेइंग विद दीज आर्मेंट्स, प्लेइंग विद दीज थिंग्स इज वेरी लाइक फैटल, इट इज़ वेरी डेंजरस. ओके, सो he has said so this was our next thing. Okay, next advice given by whom? Mark Twain. Okay, next is, okay, let I tell you this whole stanza, right? ये पूरा stanza मैं आपको बताता हूँ. Open your book right now. If you haven't opened, please open your book. I'm again and again see. Now here, never handle firearms carelessly. The sorrow and suffering that have been caused through the innocent but heedless handing of firearms but by the young. मतलब कभी भी you should not handle, you should not take the firearm. I'm sorry, you should not take the firearms, you should not take these armaments, okay, these guns, because the sorrow and suffering that have been caused through the innocent but headless handling of firearms by the young. क्योंकि यंग हाथ मतलब मार्क ट्वेन ये कहना चाह रहे हैं कि यूथ को कभी भी फायर आर्म्स नहीं यूज़ करने चाहिए, कभी भी गन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे जो डिस्ट्रक्शन मतलब होता है, उनसे जो र्यूननेस होती है, दैट इज़ वेरी फैटल. ओके, बिकॉज यूथ आर स्टिल अ चाइल्ड, they are not totally an adult. Okay, so they are not very aware about how to like what is the right strategy to right to shoot the gun. Okay, so अगर उनसे कोई गलत निशाना लग जाता है, so they can be very fatal, it can prove very fatal. Okay, only 4 days ago, अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है. Only 4 days ago, right in the next farmhouse to the one where I am spending the summer, a grandmother, old and grey and sweet, one of the loveliest spirits, crept in and got down an old battered rusty gun. Okay, मतलब 4 days ago, मतलब 4 दिन पहले की बात है. ओके, द नेक्स्ट फार्म हाउस मतलब मेरे पास वाला जो फार्म हाउस है उसमें आई वॉज स्पेंडिंग माई समर्स, मैं अपनी गर्मी मतलब आई वॉज स्पेंडिंग माई समर्स, मैं बाहर बैठा हुआ था. ओके, तभी मैंने देखा ए ग्रैंड मदर, अ ग्रैनी विद ओल्ड एंड ग्रे एंड स्वीट, वन ऑफ द लवेस्ट स्पिरिट हु वॉज वेरी स्वीट एंड वेरी लाइक काम. ओके, in the land, she was sitting in the land and she was basking the like sun. Okay, she was sitting at her work, वो अपने काम कर रही थी. When her young grandson crept in and got down on an battered rusty gun. Okay, and when his grandson he brought a rusty gun which had not been touched for many years and was supposed not to be loaded and pointed at her, और जो कि बहुत सालों से नहीं छुई गई थी. इट वॉज रस्टी, उस पर जंग आ गई थी. ओके, तभी जो ग्रैंडसन है उसने क्या किया, उसने वो रस्टी गन को अपनी ग्रैंड मदर पर पॉइंट किया, अपनी ग्रैंड मदर पर इशारा ताना. Okay, laughing and threatening to shoot, and she was just saying and laughing to shoot her grandmother. Okay, in her fright she ran screaming and pleading towards the door on the other side of the room, but as she passed him the placed the gun almost against her very breast and pulled the trigger. And when grandmother saw
when she saw that his grandson is pointing the gun towards her, then she ran away towards the door. वो दरवाजे की तरफ भागी और उसने उस ग्रैंडसन को, अपने ग्रैंडसन को रोकने की बहुत कोशिश की. तभी उसने देखा कि जो ग्रैंडसन है उसने मजाक से, मतलब उसे तो मजाक लग रहा था ये सब कुछ, तो उसने बहुत, ही वॉज वेरी फ्रैंकली ही पॉइंट द गन ऑन हिज ब्रेस्ट. उसने अपनी ग्रैंड मदर के ब्रेस्ट की तरफ, मतलब अपनी जो चेस्ट है उधर उसने गन को रख दिया. ठीक है. एंड पुल्ड द ट्रिगर, एंड ही पुल्ड द ट्रिगर. ट्रिगर मीन्स जो वो ट्रिगर होता है पीछे वाला, उसने उस चीज को पुल किया. ओके. नेक्स्ट, ही हैड सपोज्ड इट वॉज नॉट लोडेड एंड इट वॉज राइट, इट वॉजेंट. और उस लड़के को लग रहा था कि ये लोडेड गन नहीं है, बट वो लोडेड गन नहीं थी. इट वॉज गुड कि वो लोडेड गन नहीं थी. अगर वो लोडेड गन होती देन he can murder his own grandmother. Okay, so you can see that you should never keep the armaments in front of children and or at that place where children can reach. Okay, you should not put that armaments, and that's why you have seen your parents used to keep those guns and all inside something very in a very like a closed in a very close closet or something like this. Okay, so that you cannot reach through that. Okay. Next thing he has suggested, so this was the story. Okay. Next thing he has suggested that he tells kids to read good books, and he jokingly suggests a few including one of his own books. Means और next advice क्या करते हैं, मार्क ट्वेन क्या देते हैं, to read good books, to have a reading of good books. Okay. And he jokingly, he satirically, he suggests his own book. Okay, मतलब वो satirically क्या कहते हैं कि आप मेरी बुक पढ़ो, जो मैंने लिखी है आप उन बुक्स को पढ़ो. It is a sarcasm, it is ironical statement. वो सटारिकली क्या कहते हैं, सटारिकली वो कहते हैं दैट रीड गुड बुक्स एंड यू कैन टेक माई बुक्स एज वेल बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड. ओके. ट्वेन एंड्स बाय सेइंग दैट ही होप्स किड्स विल. ओके, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कंटेंट अपनी बुक से. सो ट्वेन सेज देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ बुक्स बट good ones are the sort for the young to read. Remember that they are a great and inestimable and unspeakable means of improvement. Means books are your best friends. Okay, जो कि आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देती हैं. Okay, और they will give you a positive vibe to select the good path for you. Okay, मतलब आपने देखा होगा जो भी गुड बुक्स पढ़ता है, he will be very intelligent person. उसे सब नॉलेज होगी, हर चीज़ की नॉलेज होगी. जो भी एक बुक वॉर्म होता है, बुक वॉर्म मीन्स जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें मैक्सिमम हर चीज़ की नॉलेज होगी, हर चीज़ को वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं. ओके. Therefore, be careful in your selection, my young friends. मार्क ट्वेन कहते हैं we very careful while selecting the books because books are many types. बहुत तरह की बुक्स होती हैं, फ्रिक्शन बुक्स, हॉरर बुक्स, रोमांटिक बुक्स. ओके. एंड लाइक मैनी टाइप्स ऑफ बुक्स आर देयर, ड्रामेटिक बुक. ओके. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द राइट एंड करेक्ट बुक. ओके, फॉर यू. बी वेरी केयरफुल, confine yourself exclusively to Robertson's sermons, Buster's Saints Rest, The Innocents Abroad, and works of that kind. ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मार्क ट्वेन के थ्रू. ओके. मार्क ट्वेन कहते हैं कि आप इनमें से कोई भी बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड. ओके. लाइक Robertson's sermons, Buster's Saints Rest, The Innocents Abroad, and works of that kind. ये सारी बुक कौन सी हैं? ये सारी बुक है रिलीजियस बुक, जो भी मैंने अभी पढ़ी. अपनी बुक में देखो, सॉरी, अपनी बुक में सी इन योर बुक,
These all books are religious book. सारी बुक्स ये रिलीजियस बुक्स है. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. रॉबर्ट्स सर्मन, Bastards Saints Rest, The Innocents Abroad, and works of that kind. ये सारी रिलीजियस बुक हैं. तो मार्क ट्वेन क्या कहना चाह रहे हैं कि I'll suggest you, I'll recommend you to read the religious books. क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि रिलीजियस बुक्स जो होती हैं वो हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज देती हैं. ओके, रिलीजियस बुक्स से हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है. ओके, तो मार्क ट्वेन सजेस्ट करते हैं कि हमें रिलीजियस बुक्स पढ़नी चाहिए. ओके, एंड ही इज जोकिंग, ऐसे ही टोल्ड यू, ही टेल्स किड्स, वो बताते हैं किड्स को टू रीड गुड बुक्स, and he jokingly suggests a few, including one of his own books, and he satirically, he ironically, he sarcasmically suggests his own books. वो अपनी ही बुक्स को सजेस्ट करते हैं कि आप मेरी बुक्स में से कुछ पढ़ सकते हो. ओके, नाउ and Twain ends by saying that he hopes kids will remember his advice and use it to build their character. He jokes that if they do, they will be surprised to see how much they are like everyone, else. Okay? And Mark Twain says, he ends this essay by saying this, that kid will remember his advice and use it to build their character. Means जो मैंने एडवाइस बताई हैं आपको, आप एक बार उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें और सी द रिजल्ट, सी द चेंज इन योर, सी द ड्रामेटिक चेंज इन योर सेल्फ. यू विल सी दैट योर कैरेक्टर एंड योर एटीट्यूड ऑल विल चेंज एंड यू विल बी लाइक्ड बाय एवरीवन. ओके, एवरीवन विल लाइक यू. Okay, so the last stanza he said, but I have said enough. I hope you will treasure up the instructions which I have given you and make them a guide to your feet and a light to your understanding. Means I have said enough. मैं बहुत कह चुका. Now I hope, अब मुझे आशा है कि आप ये जो मेरी एडवाइजेस हैं अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा एनहांस करेंगे. Build your character thoughtfully and painstaking upon the precepts and by when you have got it built, you will be surprised and gratified to see how nicely and sharply it resembles everybody else. और एक बार अगर आपने ये जो जितनी भी एडवाइसेस मैंने बताई हैं इन्हें अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, यू विल सरप्राइज, यू विल स्टन टू सी दैट हाउ विल यू चेंज, हाउ योर कैरेक्टर विल चेंज. मीन्स अगर आपको अपने कैरेक्टर को चेंज करना है, इफ यू वांट टू सीम स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव इनफ, so you should apply these advices. Okay, now here we have come to the end of our story. I hope you are clear with this thing as well. So that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos and bye guys. If you love this video, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon as well. I have told you line by line explanation in some part. Okay, so that's it. Bye bye. Stay tuned. Bye guys. Have a good day.